बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डहम बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूके इस्लामिक मिशन के ब्रांड एम्बेसडर इकी रहमान पिकेस चैलेंज 2024 दुनिया की 14वीं बुलंद तरीन चोटियों को सर करने के लिए आज 21 अप्रैल 2024 को मानचेस्टर से नेपाल रवाना होकर नेपाल पहुंच गए और इसके बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। इससे यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें यूके इस्लामिक मिशन के अरकान के अलावा मकामी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। बरतानिया के मुमताज़ आलिम दीन और यूके इस्लामिक मिशन नॉर्थ जोन के सदर और इमाम मौलाना मोहम्मद इकबाल ने इकी रहमान की कामयाबी और बाखैरियत से वापसी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। इस मौके पर इकी रहमान ने मीडिया से खुसूसी बात की। माजी और मौजूदा कामयाबियां और मुस्तकबिल के प्रोग्राम, जिनमें 14 चोटियों के मुतालिक तफसीलात बताएं। उनका मजीद कहना था कि इस सारे टूर और चोटियों पर जाने से आने वाली आमदन UKIM को दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी के मंसूबों और ज़रूरतमंद बाशमूल बरतानिया, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, शाम, अफगानिस्तान, मोरक्को के लोगों में तकसीम किया जाएगा। Assalamu alaikum. My name is Akir Rahman and I'm a mountaineer and I'm the brand ambassador for UKIM, and inshallah with the support of UKIM I will be climbing the 14 peaks. That's the 14 highest mountains in the world and they're all over 8,000 meters. Tomorrow inshallah I will fly and I will go to Nepal to do my first phase where I'll be climbing Mount Everest, Lhotse, Mount Makalu and Kanchenjunga. So those four I'll be climbing from tomorrow up until the end of May inshallah, and then at the start of June I will be traveling to Pakistan and I will do the 5 there. That includes Nanga Parbat, Gasherbrum 1, 2, Broad Peak and K2. So inshallah that will be the 9 mountains I will climb this year, and next year we'll do the other 5 to complete the 14 peaks. So please keep me in your duas. The link is everywhere. Please click the link, learn about it, see where we're helping and donate as much as possible. Jazakallah. Assalamu alaikum. इस मौके पर UKIM बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल BR सज्जाद अमीन ने सिविल सोसाइटी के तौर पर UKIM की तारीख, मकासद, मिशन और फलाही मंसूबों की तफसीलात बताई। My name is Sajjad Amin, UK Islamic Mission Secretary General. Mashallah, I'm very pleased and very excited by the current plans for our brand ambassador, Brother Iker Rahman, who is embarking on his journey tomorrow, inshallah. We pray for his safety, we pray for his well-being, and we pray for his success as well. He's raising funds for various good causes around the world, and inshallah we ask all of you to join us and support us in this endeavour as we bring relief to those that are suffering around the world, wherever they may be. Inshallah, you can catch more information about the challenges at 14peaks.org. That's 14peaks.org. Please stay tuned and please do support the causes. Jazakallah khair. Thank you. ताहिर नसीर ने नौजवान रहमान के टूर के मुतालिक तफसील से बताया और उन्होंने कहा कि बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर के मुखय्यर हजरात को नौजवान रहमान के अजीम मकसद में उनका साथ देना चाहिए और बढ़ चढ़कर फंड्स रेजिंग में हिस्सा लेना चाहिए ताकि नौजवान रहमान की हौसला अफजाई के साथ दुनिया भर के मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए। उन्होंने रहमान की टूर के मुतालिक बात करते हुए बताया, 14 चोटियों के चैलेंज का पहला मरहला आज 21 अप्रैल 2024 से नेपाल पहुंचने से शुरू होगा। इसके बाद जून जुलाई पाकिस्तान जाकर दूसरा मरहला शुरू होगा। Assalamu alaikum everyone. I am Tahir and I am in the events department of UK Islamic Mission. I am first of all grateful to the UKIM leadership, members and all our volunteers and branches to come to this stage that we are now launching 14 Peaks Challenge for the UKIM for humanitarian causes across the world. And I am also very proud that we have appointed a brand ambassador, Akir Rahman, who is an adventurer and a professional mountaineer, who will be taking this challenge, and he will be spending time in the death zone in the Himalayas and the Karakoram and taking the UKIM flag to the 14th highest peaks of the world. I'm also very happy that I have the full support of my trustees and my organization to plan this, and it is one of a kind and exclusive event. Only 452 people in the world have completed this challenge, and inshallah with the support of Allah Ta'ala and with the help of Allah Ta'ala and support of UKIM, Akir Rahman, our brand ambassador, will be the 53rd person to do this challenge inshallah, and in four phases. He's off to Nepal tomorrow,
and he'll be carrying the UKIM flag to Nepal. He'll do Everest, Makalu, Lhotse and Kanchenjunga, and then in the next phase from June onwards he'll be going to Pakistan doing K2, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, then Nanga Parbat and the Broad Peak, and that completes his 2024 expedition. I want and request all of Muslims here who get this message from me to please help Akir Rahman, pray for him and pray for his safe return, and also fundraise for this cause as much as you can, because whatever you go, Akir Rahman is going to do this feat for you to help the suffering humanity, suffering brothers and Muslims, brother and sisters and Muslims in Syria, Yemen, Gaza, in Rohingya, in Bangladesh, in Pakistan, Afghanistan, and all the troubled areas where humanity is in trouble. We are going to reach out and try to help through this fundraising. Thank you. Jazak. आखिर में UKIM नॉर्थ जोन के सदर मौलाना मोहम्मद इकबाल ने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। Assalamu alaikum, my name's Billy Rahman. I'm here representing Iron Foundation, one of the sponsors for Akir Rahman's 14 Peak Challenge. So we've come here to show support, and inshallah we reach our hands out to everybody watching to also put their support forward, because it's for a fantastic cause and he's really putting his life on the line to make a difference for others. Jazakallah khair. Thank you. UKIM के ब्रांड एम्बेसडर इकी रहमान UKIM के ताउन से फलाही कामों के लिए एक अजीम और खतरनाक मिशन पर रवाना हो गए हैं। दुनिया भर के मुखय्यर लोगों को फंड देने के लिए उनके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए ताकि वो अपने मिशन को कामयाब कर सकें। Namaste, welcome to Nepal, UKIM Islamic Mission Guru Ambassador, our Akir Rahman brother. Welcome. Nice to see you again. Nice to see you again. And he is going to 14 Peaks Challenge, and we are organizing, Makalu Adventure is organizing his expedition. He has been several times in Nepal. Mohan Lamsal, chairman of Makalu Adventure, would like to welcome him. Once again, welcome to Nepal. Thank you. मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।